Now guys, moving ahead from the scary story of these fake reviews going on, let's have some fun. और fun कुछ ऐसा है because the way we use all these digital devices around us right now, we must remember that they all started as analog at some given point of time and वहाँ से evolve होते होते आज हम उन्हें use कर पा रहे हैं. If you look at your keyboard, you all would remember the QWERTY keypad, you know. शायद हमारी लास्ट मेमोरी से वी हैव सीन कीबोर्ड्स लाइक द वे दैट यू नो दे आर राइट नाउ. इट्स ऑल QWERT, POIUY, ASDFG, semicolon LKJ, like you know the sequence. But did you know that it was not like this in the beginning? पहले जब हमारे पास में टाइपराइटर्स हुआ करते थे, बिकॉज दे वर मैकेनिकल डिवाइसेज, यू नो, रनिंग ऑन काइंड ऑफ, यू नो, डिफरेंट एलिमेंट्स, वहां पे बिकॉज ऑफ फास्ट टाइपिंग, इफ यू टू टाइप वेरी फास्ट, नॉर्मली these arms, you know, would be stuck in between, और अल्फाबेट्स को एक्चुअल में दूर दूर रखना पड़ता था, जो शायद एक सीक्वेंस में होते होंगे कभी, बट जस्ट टू मेक श्योर दैट द टाइपराइटर फंक्शंस ऑल राइट. एंड वहां से देन, यू नो, विद मल्टीपल इवोल्यूशंस वी हैव फाइनली अराइव्ड एट द QWERTY कीपैड दैट वी यूज राइट नाउ. एंड फॉर अ फैक्ट, इफ यू लुक एट एनी सिंगल लाइन ऑफ दैट कीबोर्ड, typewriter is the longest word that you can write using only one row of keys on this keyboard. The first row, QWERT, POIUY. इसको use करके बनता है typewriter, which is the longest word. And speaking of longest word, I would not even attempt this, but right in front of you is the longest word. Can you pronounce it? If you can, go ahead, drop in all your entries जो आपने videos record किए हैं at my address tg@ndtv.com. Pneumono ultra microscopic silicovolcanosis. Pneumono ultra microscopic silicovolcanosis. Pneumono ultra microscopic silicovonocal. Guys, I would take forever. I'll see you after the break, लेकिन आप अपनी एंट्री जरूर करना at tg@ndtv.com. I'll try applying myself as well.